Welcome to my channel, dear student. In last video we have discussed 10th class mathematics coordinate geometry exercise 7.1 up to question number 1. So this is our second question. Find the distance between the points 0 0 and 36 15. इनके बीच की आपको distance find out करनी है. Now is asking, can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. आपकी बुक में section 7.2 के अंदर ये चीज डिस्कस की गई है. आपको उस मेथड से भी इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी. सो लेट्स फाइंड द सिंपल डिस्टेंस. कंसीडर इट A point. Two given points are there, that is 36 and 15. So AB, what is the distance formula? x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square and its square root. So x1 y1 is this and x2 y2 is here. So 0 minus 36 whole square plus 0 minus 15 whole square and its square root. So let's see. It become minus 36 whole square plus it is minus 15 whole square. So नेगेटिव टर्म आई हैं, अगर स्केयर करेंगे देन इट विल बी पॉजिटिव. तो 1296 1296 प्लस 225 एंड इट्स स्क्वायर रूट. So their sum is 1521 and its square root you can find it 39 unit. So we have find the simple distance, but now he is saying कि can you now find the distance between the two towns A and B. तो सेक्शन 7.2 में ये डिस्कस किया गया था कि वहां पे दो पॉइंट्स हैं. यू कैन सी इन द बुक कि A और B दो टाउन हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड इट. According to the situation discussed in section 7.2, here A is at the origin and B is at coordinate 36 15. He is saying कि जो B टाउन है वो A के ईस्ट और नॉर्थ में पड़ता है. ईस्ट 36 एंड नॉर्थ 15 यूनिट है. सो हमने इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. सो टू फाइंड दिस डिस्टेंस लेट्स ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम B and take it point L. Now its distance is 36 and it is 15. It discussed in 7.2 section, you can see in the book. So now we have to find the distance according to this situation. So ABL is a right triangle. ये एक right angle triangle बन गई है. So in that AB square is equal to AL square plus BL square by Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem के according क्या हुआ? AB square. AB we have to find. So AB square equal to AL. AL is 36. So its square is 36 square and here BL 15 square. So it is 1296 plus 225. The sum is 1521. What we observed, that is same thing. Sorry. So it's AB square. Now what will be AB? So its square root. So that is 39 unit. So along with this, our first question is over, second question is over. So let's start the third question. So this is the third question. Determine if the point 1 5 2 3 and minus 2 minus 11 are collinear. So हमें यहाँ चेक करना है कि 3 given points जो हैं वो collinear हैं या नहीं. So what is collinear? If they lies on one line, अगर वो एक ही straight line पे lie करते हैं, suppose that here is a point A, here is a point B and here is a point C, then definitely sum of two distances, sum of two parts AB plus BC equal to AC. तो किन्हीं दो के distances का sum जो है वो third के equal होगा. But if they are not collinear, अगर वो collinear नहीं हुए, then definitely a triangle will be there. So एक triangle बनेगी. So A, B, C. So according to the law of inequality, the sum of two sides of triangle is always greater than third side.
तो दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। सो हम तीनों डिस्टेंस यहां से फाइंड आउट करेंगे। लेट्स कंसीडर इट्स पॉइंट ए 1 5, B is 2 3 एंड C is -2 -11। सो हम यहाँ पे तीनों लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ए बी, बी सी एंड सी ए। अगर किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल हो गया देन डेफिनेटली दे आर कोलिनियर। अगर नहीं हुआ तो इट मीन्स दे फॉर्म द ट्रायंगल, तो वो कोलिनियर नहीं है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्टेंस ए बी। फॉर्मूला इज x1 minus x2 होल स्क्वायर plus y1 minus 2 whole square. So this is x1 y1 and this is x2 y2. So 1 minus 2 whole square plus 5 minus 3 whole square and its square root. So 1 minus 2 minus 1 square plus 5 minus 3 2 square. So this AB equal to square of -1 is 1 and it is 4, so that is root 5. So AB लाइन सेगमेंट की जो लेंथ आई है that is root 5 unit. Now let's find the distance between BC. So then same formula will be there and B and C के लिए ये पॉइंट्स हो जाएंगे. So that is 2 minus -2 whole square plus 3 minus -11 whole square and its square root. So it will become 4 square plus 14 square and its square. So BC equal to 4 square 60 plus 14 square 196 its square root. BC become 212 square root. Now let's find the AC. So AC is equal to 1 minus -2 square plus 5 minus -11 square and its square root. So AC equal to 1 plus 2 square plus 5 plus 11 square and its square root. So it become 3 square plus 16 square root. So that's 9 plus 256, that is 265 square root. Now what we see कि AB equal to root 5 and BC equal to 212 and AC equal to 265 root. So these all are irrational number. So we can't add them, we can't subtract them. So we are unable to check that कि sum of two sides is equal to third side. For example कि हम कहें कि AB plus BC is equal to AC. अगर ऐसा होगा then it will be collinear. But here we are unable to add them. So we can't say they are equal. हमें ये इक्वल नहीं मिल रहे, सो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल बिकॉज हम चेक नहीं कर पा रहे हैं. सो इट मीन्स दे आर नॉट कोलिनियर. सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. This is our fourth question. Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. तो ये वर्टिसेस गिवन है, ये चेक करना है कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि टू साइड्स इक्वल होती हैं. सो लेट्स फाइंड ऑल थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल. कंसीडर इट A 5 minus 2 and B is 6 4 and C is 7 minus 2. So these are three vertices of triangle. So let's find AB. So formula is x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square and its square root. So this is x1 y1, this is x2 y2. So 5 minus 6 square plus minus 2 minus 4 square and its square root. So it's minus 1 square plus minus 6 square, its square root. It will be 1 plus 36 square root. So AB
is equal to 37 root. So here our AB is 37 root. So let's find BC. Now BC. For B and C, these are 2 points, 6, 4 and 7 minus 2. So let's find it. So 6 minus 7 square plus 4 minus 2 square and its square root. It's minus 1 square plus its 6 square. It's 1 plus 36 square root. So BC is also 37 square root. So BC is also 37 square root. Now let's find the third side. टू साइड्स इक्वल हो गई हैं, बट आइसोसेल्स प्रूव करनी है ताकि थर्ड साइड इनके इक्वल ना हो, क्योंकि अगर थर्ड साइड भी इक्वल होगी देन इट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो लेट्स फाइंड थर्ड साइड AC. That's 5 minus 7 square plus minus 2 minus 2 square and its square root. So AC is equal to minus 2 square plus it will be minus 2 plus 2 square. So AC is equal to, its square is 4 plus it becomes 0. So then AC equal to 4 root, that is 2. So AC is the 2 unit. This is 37 root unit. This is also 37 root. What we see, AB and BC are equal. So here AB equal to BC. So yes, it is an isosceles triangle. So in this way we verify it. It's an isosceles triangle. So for the remaining part of this exercise, next वीडियो का वेट कीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.